बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग जुड़े रहिएगा और निश्चित रूप से बहुत बहुत एक आभार सभी का। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आयुष समृद्धि की 1913वीं मंजिल पर आपका स्वागत है। आज एडॉप्शन डे सेलिब्रेट करने के लिए, मैं इस शब्द को सेलिब्रेट नहीं कहता, अवेयर करने के लिए हम इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी की आयुष समृद्धि ज्ञान गंगा में रूल्स फॉर एडॉप्शन इन इंडिया, भारत में बच्चा गोद लेने के लिए नियम, इन पे चर्चा करने जा रहे हैं। और हमें बड़ी खुशी है, गर्व है कि हमारे साथ डॉक्टर सुपर्णा सान्याल मुखर्जी मैडम है, एडवोकेट प्राची पांडे जी जुड़ेंगी हमारे साथ, और हमारे साथ आदरणीय अग्निहोत्री सर, विष्णु प्रसाद शर्मा जी, सभी का, रामवीर शर्मा सर, निशांत जी, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं ज्यादा ना कहते हुए आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी से उनके स्वागत प्रवचन की प्रार्थना करता Namaskar. Good evening to everybody. Hari Om. Respected distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to AYUSH SAMRIDDHI International Webinar Series on Rules for Adoption in India. भारत में बच्चा गोद लेने के लिए नियम. In this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome Advocate Parasi Pandey from Satna. Namaskar, madam, and welcome you to this AYUSH Samriddhi International Webinar Series. Next, I want to welcome Dr. Suparna S. Mukherjee, Associate Professor and HOD, Department of Education, School of Humanities from Bolpur. Namaskar, madam, and welcome you to this AYUSH Samriddhi International Webinar. Once again, I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this important webinar on rules for adoption in India. Once again, I welcome all of you. Thank you. Namaskar. Over to Pavanji. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अब आदरणीय अग्निहोत्री सर से उनके प्रस्ताव के। धन्यवाद प्रोफेसर पवन शर्मा जी। और हम देख पा रहे हैं हम आप अनथक तरीके से इस ज्ञान गंगा को आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं और हम लोग 1913वें पायदान पर पहुंचे, जबकि विषय बनता है कि भारत में चाइल्ड को हमें जो है ग्रहण करने, गोद लेने के क्या कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपने सही कहा कि अडॉप्टेशन डे को हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर समय से ये व्यवस्था किसी भी संतानहीन पति पत्नी के या कपल के बीच में बनती है, निर्णय होता है, और वे एक सही तरीके से कोई बच्चा गोद लेना चाहते हैं या ले लेते हैं सभी नियम कायदों के साथ में, तो निश्चित रूप से उनके परिवार में खुशी का दिन होता है, किलकारी गूंजती है, और तब उस स्थिति को वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मुझे पिछले साल का याद आ रहा है, डॉक्टर ये मैम प्राची पांडे जी ने बहुत अच्छे से बताया था। 2 नियम मुझे अच्छे से आज भी याद है। पहला तो ये कि अगर कोई सिंगल मेल है, केवल फादर है, मतलब उसके फैमिली में लेडीज नहीं है, तो उसको बालिका या फीमेल बेबी को अडॉप्ट नहीं कराया जाएगा, ये रूल है। और दूसरे, शायद जिसकी उम्र 50 साल हो चुकी है, जिस कपल की, शायद, तो वहां भी बच्चे को अडॉप्ट करने का रूल नहीं है, क्योंकि ये उम्मीद किया थी कि उसके बाद वो शायद उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम, रजिस्ट्रेशन, वेलबींग, इन्वायरमेंट, डिजीज रहित, व्याधि रहित कपल की स्थिति, और बहुत सारी जो प्री कंडीशन है वो सब तो है ही। और बच्चा घर में बिल्कुल नहीं है, या अडॉप्ट करने के बाद दूसरा बच्चा भी बनता है तो अगर कोई इसको वापस करना चाहे, ऐसा कोई रूल नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये रूल रेगुलेशन सब हमें मैडम बताने जा रही हैं। आज दोनों ही हमारी अतिथि वक्ता हैं और वो अच्छे से बतलाएंगे। डॉक्टर सुपर्णा सान्याल मुखर्जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और हमारी दूसरी वक्ता प्राची पांडे जी हैं, उन दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। एंड वी आर
we are eager enough to know and to note so many rules and regulations for the adaptation of child in India. अब वो ऑर्फन चाइल्ड है, क्या है, कैसे है, फैमिली में है, डिस्टेंट रिलेशन में है, एक्सटेंडेड रिलेशन में है, क्या कुछ है, सभी के रूल्स हैं और उन सब के बारे में आज जानकारी मिलने वाली है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः प्रोफेसर पवन शर्मा जी को निवेदन करते हैं कि हमारे अतिथि वक्ता को आप सादर आमंत्रित करिए। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत आभार सर आपका। मैं आदरणीय मैडम को आमंत्रित करूं उसके पहले आपकी परमिशन से कुछ शेयर करना चाहता हूं कानून के विषय में। रेनो जी प्राची स्वागत। पांडे जी जुड़ रही हैं, तब तक मैं शेयर करना चाहता हूं। हम यदि एडॉप्शन की बात करते हैं तो एडॉप्शन, उसके लिए लॉ है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। अब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जहां क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन सॉल्व रानो जी करेंगी। मैं आशा करता हूं सुपर्णा जी भी इसमें बहुत सारी बातें ऐड करेंगी। फिर भी लॉ की बात मैं कर दूं, क्योंकि ये पहला लेक्चर है। हमारे यूट्यूब के दर्शकों को भी लॉ क्लियर होगा कि इसका लॉ क्या है। नो एडॉप्शन इज वैलिड अनलेस द पर्सन एडॉप्टिंग इज लॉफुली कैपेबल। वो एडॉप्शन कर सकता है कि नहीं, ये कानूनन देखा जाएगा। द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन इज लॉफुली कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन और नॉट। और जो एडॉप्टेड है पर्सन, वो लॉफुली कैपेबल है क्या एडॉप्शन करने के लिए। एडॉप्शन इज कंप्लीटेड बाय एन एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कौन अडॉप्ट कर सकता है? मेल की बात करें तो कोई भी मेल हिंदू कर सकता है, जो साउंड माइंड का हो, माइनर नहीं हो। एक डॉटर या सन कोई अडॉप्ट कर सकता हो, प्रोवाइडेड दैट ही इफ ही हैज वाइफ लिविंग he shall not adopt except the consent of his wife। वाइफ यदि जिंदा है तो वाइफ की मर्जी के बिना मेल अडॉप्ट नहीं कर सकता। फीमेल हिंदू की बात करें यदि, तो कई जो साउंड माइंड हो, माइनर नहीं हो, जो मैरिड है समझ लो, उसकी मैरिड तलाक वगैरह कुछ हो गया हो, हस्बैंड डेड हो या अलग हो गए हो सेपरेशन हाईकोर्ट से वगैरह से, वो और उसकी कैपेबिलिटी हो कोई बच्चा पालने की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हु मे गिव इन एडॉप्शन, नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और गार्जियन ऑफ द चाइल्ड। अब ये अनाथ आश्रम से लिया तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है या सोसाइटी। यदि किसी दूसरे का बच्चा गोद लेना है तो मदर और फादर या गार्जियन से लेना पड़ेगा। यदि फादर अकेला है समझ लो, तो वो राइट है कि एडॉप्शन दे देगा, वो विद कंसेंट ऑफ वाइफ। मदर में गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन इफ द फादर इज डेड। मैं अब इस चीज को बंद कर रहा हूं, क्योंकि अब हमारे साथ हमारी असल वक्ता आ चुकी हैं। यदि कुछ कंफ्यूजन होंगे तो हम क्लियर कर लेंगे, नहीं तो आदरणीय मैं हमारे प्रथम वक्ता प्राची पांडे जी को सादर आमंत्रित करता हूं उनके वक्तव्य के लिए। एडॉप्शन रूल्स इन इंडिया। मैडम प्राची पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हो, जय हो। नमस्कार जी, नमस्कार। Hariom sir, thank you so very हरिओम, much. And स्वागत। Bilkul, indeed, it is always a pleasure to join you all the seniors, all the dignitaries. And yes, after a long time, but and in a short in a short period of notice, actually, थोड़ा busyness थी, शादियां, social engagements, and other things. So I was not really on time, but still I'll contribute a small part of mine. So first of all, before moving to my forte, which is more of legal advocacy, I would
like to really congratulate the entire team for conducting such kind of awareness creating series. I would say not just talk series, but it is also about educating people on various specific dates. जैसे मैं सच बताऊं तो मैं एक एडवोकेट हूँ, अडॉप्शन डीड्स और ये सब हम हिंदू अंडर हिंदूज एंड अदर जो सेक्युलर लॉज हैं उसके अंदर हम वी डू एग्जीक्यूट दोस काइंड ऑफ थिंग्स, बट ऑनेस्टली मुझे ये नहीं मालूम था कि आज नेशनल अडॉप्शन डे होता है. सो यस, इट्स अ वेरी अवेयरनेस क्रिएटिंग काइंड ऑफ अ थिंग. सो यस, थैंक यू सो वेरी मच. एंड अब अगर मैं अपने फोटे की बात करूं तो जब हम कहते हैं अडॉप्शन, तो इंडिया में जो लीगल फ्रेमवर्क है अबाउट adoption is basically and broadly it can be divided into two parts, where one part and one kind of litigation is जो कि एक पेरेंट और एक चाइल्ड का रिलेशनशिप क्रिएट करता है. वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो कुछ लॉज, कुछ लेजिस्लेशन ऐसे हैं जो कि सेक्युलर है नेचर में, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, एनी क्वालिफाइंग पर्सन, अडॉप्टिव पेरेंट्स कैन गो फॉर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड. लेकिन वहां पर उस शब्द को अडॉप्शन बोलना इज नॉट व्हाट इज लीगली रिटन इन द लॉ. मतलब लॉ में उसे अडॉप्शन नहीं कह के और पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप नहीं क्रिएट होके वहां एक गार्जियन और एक वार्ड की रिलेशन क्रिएट होती है. सो देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन child and a parent. In law, child and a parent relationship will be just like biological child and biological parent. वैसा ही रिलेशन होगा. जबकि जो सेकंड सेट ऑफ लॉ है वहां पर एक गार्जियन और एक वार्ड की रिलेशन क्रिएट होती है, जहां पर इट्स नॉट रियली अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बट yes, broadly the responsibilities and broadly the duties is almost the same. बस difference होता है थोड़ा inheritance right में कि फिर property में rights and all those kind of things. वहां पर there is a bit difference between the two set of laws. So today I will not take a lot of your time. I'll keep it very short because honestly मतलब मैं what we do, हम जो करते हैं on a day to day thing, I'm just sharing that with you. I'm not really मैं एक रिक्वेस्ट करूं आपसे. जी जी. आप लेट हो गई थी तो मैं थोड़ा सा आपका सपोर्ट कर रहा था. मैं एक सपोर्ट अभी भी आपका करना चाहता हूं, क्योंकि जो आप बोल सकती हैं वो मैं जिंदगी में नहीं बोल सकता लॉ के विषय में. तो मैं नहीं नहीं सर. एक सपोर्ट करना चाहता हूं. जी जी. इफ यू काइंडली परमिट, क्योंकि आप बोल सकती हैं. श्योर. जस्ट ए मिनट. मैं यहाँ से आप जो भी उड़ता उड़ता बोले, ये देखिए. सर अब सर ये थैंक यू सो वेरी मच, बट मतलब मैं ये थैंक्स अ लॉट, ये मैं आपको बता लूंगी ऐसे, मतलब इफ आई नीड दिस आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. थैंक यू सो वेरी मच. ओके, थैंक यू. जी जी. बस क्योंकि मतलब ये इसमें कि आज सभी मेरा थोड़ा पॉइंट शॉर्ट वाइज रहेगा. क्लियर है. हाँ, थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा. मतलब मैं इसमें तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है, बट व्हाट आई मेंट टू से इज कि थोड़ा शॉर्ट रहेगा. कोई बात. एनीवे, तो जैसे फर्स्ट सेट ऑफ लॉज की अगर बात करें तो मेनली विच इज फोकस टुवर्ड्स हिंदू एंड द सबसेक्ट्स ऑफ हिंदू. तो अगर लॉ में बात करें तो हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले, उसके अलावा सिख, जैन, पारसीज, इनके लिए जो लॉ है इन प्लेस फॉर अडॉप्शन, दैट इज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. तो शॉर्ट में उसको हामा बोलते हैं. So this is what which basically governs Hindus and the subsects of Hindus. अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें अडॉप्शन के लिए ब्रॉडली इवन इन द और जो सेकंड ब्रांच है जिसमें जो कि एक सेक्युलर लेजिस्लेशन है, उसमें आपके रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है. दैट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, विच इज कंपैरेटिवली अ न्यूअर एक्ट. तो इसमें मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ऑल द अदर बारिंग हिंदूज, सबके लिए दिस इज एप्लीकेबल. अब जो मैं पहले बात बता रही थी कि पेरेंट चाइल्ड और गार्जियन वार्ड, तो ये जो दूसरा वाला एक्ट है गार्जियनशिप एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, ये भी एक एक्ट है. इन दोनों एक्ट्स में गार्जियन और वार्ड की रिलेशन क्रिएट होती है.
पेरेंट एंड चाइल्ड की रिलेशन क्रिएट होती है ओनली इन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, बिकॉज नाउ इन इंडिया वी नो दैट देयर इज नो एज सच यूसीसी इन प्लेस, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं पर्सनल लॉज जो होते हैं, personal laws, Hindu law governing the Hindus and the subsects and the Muslim law governing the Muslims and all, तो कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट इन ये जो लेजिस्लेशंस बने हैं इस पर है. सो वी टॉक अबाउट हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो इसमें अडॉप्टिव पेरेंट्स, मतलब जो पेरेंट अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी जो अदर क्राइटेरियाज दी गई हैं, उनमें जो बेसिक बेसिक चीजें हैं दैट इज अबाउट द एज, कि अगर आपको इंडिया में अडॉप्शन करना है तो आपको खुद अडॉप्टिव पेरेंट्स को कम से कम 25 ईयर्स का होना चाहिए. सो इट दैट इज अबाउट द एज. देन अबाउट योर मेंटल वेलबींग, सो बेसिकली योर हेल्थ, फिजिकल वेलबींग, आपको कोई भी ऐसी सीरियस इनक्योरेबल डिसीज ना हो, यू आर मेंटली वेल. देन यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, दैट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे अलग अलग एक्ट्स में, जुवेनाइल जस्टिस में हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो कि एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं. आप एक बार एप्लीकेशन देंगे कि यू विश टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, तो द प्रोसीजर दैट यू गो थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री जो होती है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके अंडर ये सारे सेंटर्स वगैरह आते हैं. तो वहां पर जब आप एक आवेदन देते हैं, उसके बाद एक सर्वे रिपोर्ट बनाई जाती है. सो द एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज वन ऑफिसर इन चार्ज. तो वो आपके जो जो सर्वे होता है उसमें इन सब चीजों का ही होता है, अबाउट योर एज, अबाउट योर फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, बेसिकली योर हेल्थ, योर फाइनेंशियल वेलबींग. फाइनेंशियल वेलबींग के बाद मैरिटल स्टेटस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अमूमन हमें लगता है कि वी वुड वांट टू नो, कि अगर किसी की नई नई शादी हुई है एंड दे आर लाइक नो, लाइक रिसेंटली आई हैड अ क्लाइंट, तो they were like, no, we are not we are not very keen in having our own child, but we want to adopt out of some very well off family. But they were like कि नहीं हमें adopt करना है, we want to add something to the society. तो okay, so in that case मैरिज होने के कम से कम 2 साल तक आप अडॉप्ट नहीं कर सकते. यू कैन ओनली ऑप्ट टू अडॉप्ट आफ्टर 2 years ऑफ योर मैरिज, विच इज समथिंग दैट अ लेमन डजंट नो. तो कम से कम 2 साल आपको वेट करना होगा. ओनली आफ्टर 2 years यू कैन गो फॉर अडॉप्शन. सो दैट इज ऑल्सो अबाउट, ये एक बात हो गई कि मैरिटल स्टेटस आपका जब मैरिड अनमैरिड से मैरिड हुआ तो what time you have, what is the limitation, what is the time bar for going for an adoption should you wish to. फिर इसके बाद जेंडर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर एक सिंगल फीमेल है तो वो किसी भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन अगर एक सिंगल मेल है तो वो केवल मेल को ही अडॉप्ट कर सकता है. कुछ लेजिस्लेशंस में मेल और फीमेल, अगर एक मेल फीमेल को अडॉप्ट करता है तो उसमें एज डिफरेंस जो है वो कम से कम 25 या 21 ईयर्स ऐसा कुछ है. आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन ऐसा होता है 21 या 25 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए इफ इट इज अ मेल adopting a female child. Otherwise, for a female, it is just 25 minimum year of age, and a female can adopt a child of any gender. अब मान लीजिए अगर a couple is married, they have one daughter, and still they want to adopt. So they can only adopt an opposite sex child. मतलब अगर उनके पास एक फीमेल चाइल्ड है, बायोलॉजिकल चाइल्ड, तो वो दूसरे फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते. They have to go for a male child. So yes, this is also a mandate in few laws. अब अगर हम और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजों की बात करें तो इफ वी टॉक अबाउट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, या फर्स्ट इफ वी से हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जो कि काफी पुराना एक्ट है 1956, although there are amendments in it. तो इसमें basically we have to go for a court order. सो बेसिकली यू फाइल अडॉप्शन डीड, जैसे कि आप सेल डीड आप घर खरीदते बेचते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, उसकी जैसी एक डीड होती है, वैसी अडॉप्शन की एक डीड होती है. उस डीड को फाइल करके यू हैव टू गो थ्रू द रिक्वायर्ड कोर्ट प्रोसीजर, और उसके बाद एक कोर्ट ऑर्डर सफिशिएंट होता है आपकी पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए, विच इज इरिवोकेबल. मतलब वो फिर उसके इनहेरिटेंस तक जाएगी. अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ
मतलब in all the ways, the person seeking the relief, the person seeking whatever from the court is capable, is competent in all different ways. तो अगर कोर्ट एक डिक्री पास करती है एक अडॉप्शन डीड पे, तो उससे एक इरिवोकेबल पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है. ये इनहेरिटेंस तक जाता है. इनहेरिटेंस मतलब अब आगे फिर प्रॉपर्टी में राइट्स एंड ऑल दैट, so that exists in the very same way as it is in case of a biological parent and children. Now if we talk about juvenile justice act, तो juvenile justice act में अगर, as I said, it is a secular act, मतलब किसी भी other religion के पर्सन को अगर अडॉप्शन करना है तो दिस इज द प्लेस फॉर यू. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. इस एक्ट में कुछ मैंडेट बनाए गए हैं, जैसे कि इसमें एक अथॉरिटी, एक नोडल अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया, विच इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी. सो दिस कारा इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. महिला बाल विकास जो मंत्रालय है उसके अंदर ये अथॉरिटी आती है. देयर इज अ फुल फ्लेजेड प्रॉपर वेबसाइट ऑफ इट. So any non-Hindu seeking adoption, seeking to adopt a child in India within the country, like it is intra-country, sorry. तो उसमें this is the authority which will govern you. So therein you have to apply. आपको एक application देना होगा, and after that you have to definitely go through the court procedures, and with that you get a relationship which establishes which established between the two, as I said कि it will just be a guardian and ward. इसमें भी जुवेनाइल जस्टिस में भी पेरेंट चाइल्ड की रिलेशन क्रिएट नहीं होती. मतलब ऊपर ऊपर देखा जाए तो सब कुछ इट इज ऑलमोस्ट द सेम, बट देन इनहेरिटेंस की जहां बात होती है, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो पास कैसे होगी, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है. दैट्स हाउ इट इज. फिर जैसे कि अगर आप इसकी बात करें जुवेनाइल जस्टिस की, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आपको यू हैव टू गो थ्रू दिस एप्लीकेशन प्रोसीजर्स एंड देन थ्रू द कोर्ट प्रोसीजर एवरीथिंग टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द अडॉप्टिव पेरेंट्स एंड द चाइल्ड. जबकि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, जैसे कि हम हिंदू मैरिज में देखें अगर, तो हिंदू मैरिज में टू लीगलाइज अ हिंदू मैरिज, उसके पहले जो प्रेरिक्विजिट होता है वो होता है जो भी सेरेमनीज वगैरह होती हैं, सप्तपदी बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो all those things have to be established. Then is when you can take some legal help and get your marriage registered or whatever. So इसमें भी हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी एक दत्तक होम सेरेमनी होती है. तो ये संस्कार जब हो गया, उसके बाद आप एक अडॉप्शन डीड लिखेंगे अंडर दिस एक्ट, and with the proper court procedures and court order, the court will either order you or deny you the adoption or the custody of the child. तो basically इसमें मतलब what I mean to say is कि इन दोनों एक्ट्स में ये भी डिफरेंस है कि जहां हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस की बात है, वहां पर यू हैव टू शो दिस प्री रिक्विजिट रिचुअल, संस्कार ऑफ दत्तक होम सेरेमनी. मतलब यू हैव टू शो दैट ओके this is done and this is sort of a consent. And just like in Hindu marriage, जैसे मैंने आपको बताया कि सप्तपदी हुई, 7 steps हस्बैंड और वाइफ ने साथ में चला and all that, then is when a marriage can be established. Similarly इसमें एक जो संस्कार या रिचुअल होता है, it plays an important role, whereas in JJ juvenile justice में it is all about documentation, it is all about the procedures that is to be followed. So yeah, I think yes, I think अभी मेरे दिमाग में जो भी चीजें आ रही हैं, I believe I will give myself a break now. So yes, this is all what I have for you, and yes. Thank you, ma'am. Thank you so much. You pointed out so many very, very important points which we are never aware of. And Thank you, sir. But actually, this was very, very random. Like I just finished it's my still, meal and I was like, I'll just sit and do it. it's too much So informative for thank us because thank you. you have given very good important things. And I thank the lawmakers in our constitution that there are so many scopes and fields. Still, the rules and regulations are also made for the adaptation. Also, this is one thing. Yes. How Yes. much our government or our constitution, our lawmakers are sensitive to go for each and everything.
On one end, there is a total loss of the punishment and penalization. On other end, for the providence of the facilities to the childless couples, it is a Underprivileged. very good. It is Absolutely, a absolutely. it's Yeah, really yeah. a boon to that family. Of course, as you told that there may be one child, but still they want to go or to give something in a form of some good work to the society to adopt a orphan child or so. Still, there are so many ways and means Which because is which is very very common nowadays. I should tell you yeah. that yeah, people, So couples are very very happy with and adopting, single mother especially female child. Yeah. like Susmita Sen, single mother, Hmm. they are She also they are adopted coming two forward. Yeah, females. she adopted two. This is what. So things are Karan happening. Johar, Karan Johar. Karan Johar, yes, triplet, Hmm. triplet, tuplet. So they are making a little bit a contribution to the society by adopting such type of say child. But at the same time, the rules are very strict. As you told that there is a deed, and one Yes, very favorable absolutely. point. Yeah, that very important point that this legacy will run. If Yes, there will there be is early one related that child. is adopted, this is wonderful. This is wonderful. So that adopted child may may not know that I am adopted child or I am a Absolutely. family member of that, but Hmm. he or she will be benefited in the next generations also. That is really a very favorable point. I liked it, and for your contribution, it is surprising that you are not having this day as a adoption day, but still you contributed a lot. And if you are My, interested my to do, my pleasure, sir. yeah, if you can continue something, it will be our pleasure that things are made by vocal is much more better instead of going through the books or the written articles. So Yes, as absolutely. you told, I got That so is many what is things. available to everybody. So I believe more in Yeah, sharing what I do on, right, on the ground. right, Yes, yes, right. in the Yeah, court. So yes, yes, yes. and And देखिए anyway, for it's like, बिनु आप ये सत्संग देखिए विवेक न होई and Ram कृपा बिनु सुलभ न सोई. So yes, it is all by God's grace एक that आप we are देखिए living. कितनी फेवरेबल बात हो गई आपने जो बताया फीमेल्स के लिए फीमेल में गो एट एनी एज और एट एनी फॉर एनी जेंडर दिस इज वन Any थिंग gender. Yeah, दिस yeah. इज वेरी फेवरेबल फॉर फीमेल्स ये भी अच्छी बात है फॉर मेल्स Yes, इट yes. शुड बी 25 years गैप इफ शी दे आर 21 or इंटरेस्टेड फॉर 25. Yes, बहुत yes. बहुत अच्छे रूल्स है इनमें तो हमें तारीफ करनी होगी कि कपल जो इशूलेस है उनके लिए तो बहुत वरदान है ये वरदान है और हम True, देख रहे true. हैं क्योंकि मेरी मिसेज भी डॉक्टर है और उन्होंने कई केसेस अडॉप्ट कराए पहले तो इंथू में कराए अच्छा इंतजाम था फिर हम लोग बाकायदा रजिस्ट्रेशन करा के रजिस्टर ऑफिस Hmm. में जाके वो कराया है आज नहीं जानता किसका बच्चा कहाँ पहुंच गया बट दे आर वेल ऑफ They और are बहुत ही well off. अच्छे से डेवलप हुआ या तो ये अच्छा है भारत में इस कॉन्स्टिट्यूशनल इस सपोर्ट का हम लोग रियली धन्यवाद करते हैं क्योंकि अच्छी बात है चलिए और आपको कुछ एड ऑन करना है तो आप जोड़ सकते हैं Yes, I think that's all from my end today. Thank you. okay thank you so much for your joining and for your giving the knowledge to our platform thank you so much in this connection I would like to invite our second guest speaker of today's topic and our webinar she is Dr. Suparna Sandal Mukherjee and she is a very very learned and very good psychologist and having great hold over all the subject whatsoever is there being selected by our platform she always blesses us so I invite Dr. Suparna Sandal Mukherjee ma'am for her kind words namaskar ma'am Namaskar, namaskar. Thank you very much. Very good evening to all the dignitaries over here. Again, I convey my best regards and gratitude to the Ayush Samriddhi platform, who has given me another opportunity to say something, the most important and burning topic at to this juncture. It is very important and it is very interesting, the adoption process in India. This comprehensive, especially the adoption guide, is navigate that the legal, emotional, and the practical aspects which may added the various perspectives like parents in their journey. The parents, those who have not given birth of a child, and they are taking adopt the child from any places or any platform like the orphanage or the adoption center, such and such. So they have to why they are adopting, why they are wanted to take a other's child. So there is a child adoption, basically a
process that goes beyond mere legalities and involves embracing a child into one's family, that providing them the love, the stability, then support, then security, then all the factors needed, they are giving by this the adopted parents. The parents are getting involved in the supporting the child when the acts hold the social, legal, and emotional significance, especially the recognizing the adopted parents as the legal parents. So whenever we can say that when you are getting the father, when you are becoming the father-in-law, so by law you are getting father and mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law. So everything through law. Here the adopting process is also a law-based parent parentship, because when the parents is not giving birth of a child, the emotional effect is not so keen, and to adopt this child and to feel the child that their child. So in that cases, though there is some gap in between, still they are taking child for the security of their property. So this adoption process is recognizing that the which is related to the basically the historical perspectives. It was followed in the ancient time of in India, though there is no such legal restrictions, but the process was there. Now, adoption is not a new concept as such. It has practices our ancestors, because if we can look back to the past, the idea of child adoption faced societal disapproval. Like the contemporary process, this Indian society openly discuss adoption, reflecting a positive shift of the children attitudes. At the same time, the cultural behavioral aspect which they are adopting with the new parents and new family and new society, which focus to shift it to the understanding how to adopt a child in India, emphasizing the legal and procedural aspects which is needed for the betterment of the society at large. So first you have to know the child adoption, how the transformative or the transformation has done, and how you can take the child, because adoption is not a very easy process, because you must be mentally prepared first that you are going to be adopted. At the same time, the profound processes goes beyond the legalities, encompasses the emotional acceptance and commitment to the caring of a child who is not is biologically related to the adopted parents. When they are not biologically related, so every time we feel that he is or she is not the blood related. So blood relation has a different perspectives, though we don't know who is the real father and mother of us, because when take birth in the in the hospitals and nursing home, the nurses or doctors says that it is your child. So the after, if we can legally notice it that it is our parents, so we have to go for the DNA testing. Otherwise, it is the belief. So you have to inculcate your belief, your faith that it is your child, and the child also know that it is my parents, because I haven't seen when I have born who is my mother and who is my father, because when I rearing up, when I got the senses, then only I realized that she is my mother and he is my father. So at the same time, it is also happening over here, who is the real parents, and the parenting system and parenting technology is also a very bold step to make the child the adopted child in the family.
So there are so many eligibility criteria in the Indian subcontinent because first the Central Adoption Resource Authority, the CARA, which is the nodal agency, the Ministry of Women and Child Care Department, whereas overseas the eligibility criteria of the adoption to a child in India also respective from the other countries, like they also support this child rearing and child adoption act. First, you have to be the for the Indian subcontinent. You have to be the citizenship. You should be a citizen of India. So first, you have the legal, identity that you are an Indian citizen. Then the marriage status. You should be the married for this Indian subcontinent. Then you have the stability. You have the stable income. The income should not be below the 50,000, and age criteria is also there. If you are very old, you cannot take the adoption. The health condition is also there. So single parent adoption is also permitted in this Indian subcontinent and the CARA system. The child eligibility, so you can choose a child who is the good child, because it is a very significant point. You would not adopt any disabled child. You always find the good child, good health, good stability. But how do you know? Because you don't know who is the parents, what the genetic criteria they are bearing for. So maybe you are seeing that the child is very intelligent in front of you, but it may not be, because the child may become dumb in the later age. So this is a very risk factor to whom you will be adopt. But you should have be mentally prepared that I am adopting a child. It may be good, it may be bad. But in case of the parental situation, the own child, it may good. We have to accept, because we have given birth of this child. So this mental preparation, the psychological orientation, and the philosophical point of view, you have to be very strong to adopt the child. And the conditions of the parent child eligibility, which has been promote this the stable condition when the parents are taking a child for their adoption, and they are giving the bond, that they are maintaining the all needs and necessities which is required for this particular child, they will taking care of. And this requirements of this parents is also very important. The good physical and mental health, and this emotional health too, because the when you are taking care of a child, you should be emotionally attached to the child, because otherwise you cannot accept that it is your child. And the solid financial standing, absence of the life threatening illness, if you are suffering from this cancer or the AIDS or other life threatening illness, you cannot take you cannot adopt a child. And this couple with there is more children is not eligible to adopt, because you have the own child. In some cases it has been observed that the parents have this child, but still if they have a girl child, they want to adopt a boy child. If they have a boy child, they want a girl child. So this is the preference they are going, and they are also practicing in that cases. And single female may take the responsibility or adopt a child, but it is their his or her financial condition and the social conditions. But society may say anything to you in any time, because we are not we haven't reached to some extent where we can accept this kind of the adoption and adoption process. And the India, especially, first we needed the registration process. We should go for the registration. We needed, so when we are taking a child and adopting a child, we need the registration. We should do the registration. And first you have to do some homeworks. That is the how you will taking care of your child. Whenever the new parents are giving birth of a child and they are bringing their child in the home, they are taking also, they have the planning, home planning, how we can taking care of our child. So this counseling process and the
you have to be adapt for this adopting a child. At the same time, referral of the child becomes available for the adoption. The agency notifies the interested couples, and then you have to wait for that. So, if I want to take a child, agency, and agency will give you some rules and regulations, and then I'm getting the child. It is not possible. So they will observe you. They will observe your tolerance, your tenacity, your behavioral aspect, your attitude, how you will rear up of this child. So that afterwards they will allow you to take the adoption. And the acceptance of child, when you are comfort, and when your all agreement will be completed, the adopted parents sign documents which is needed for this the parents requirement. And the the caring, so you have to be more caring to taking your child. So you need the more acumen, whether you are being taking care of a adoption or the child. You should be you should have the more accommodative work should be done. And the court order, then this court order you have to follow it after the completion of this registration. And when the child best interest first, we have to take the decision. You have to give the new name of the child, and this the forever families because he or she will be the member forever for your family, and you have to accept the fact that whatever may happen, you cannot blame that child that what it has happened for this particular child, because the child is the parentless. When you are becoming the parent, so you have to be bear all the odds. And safeguarding the adoption record, so you have to be maintain the confidential record for the adoption, and from where you have taken, because you have to be more careful that if the other members of your family knows that this child is your adopting child, when he or she will be playing with the other brothers and sisters, they may be snub that particular child, because you are the adopter, you are not the blood related. So this type of significant incident may happen. The parents should be the prepare for that. And the stakeholder is the adoption process, like there is several like central adoption resource and authorities there, state adoption resource agencies there, like the CARA, SARA, and SAA, specialized adoption agency, then authorized foreign adoption agencies. They are also allowing, you can also take care of a child for the if you want to take the adoption from a UK child, like your friend's child. So if he or she is the UK citizenship, if you want to take the responsibility or this adoption, so you have to take the permission from the both the governments, the India governments and UK governments. So if the both the governments will give you the permission, you can take. And the same way, you can also take the district child protection unit, who will give you the information, and those people cannot give you the genetic information of the particular child, whether they will be the very good or not, the genetic criteria, or whether when we can adopt, like the don't take me otherwise, when we are taking the dog, we can check the 7 pedigree, but here you would not get the any kinds of pedigree information, because you have to adopt in on your own risk. It may be good or it may be bad. That it is a God will be support you, and you have to be more prepared on these cases, that what you are taking a risk. And this documentation is also required, the adoption application, the photographs, then your Aadhaar card, PAN card, such and such, reason for adoption, why are you wanted to taking the adoption, the income certificate, then proof of residence, investment. So many formalities are there, you have to be come across. And duration of this adoption process, you have to when you are adopting this child, that means it is not the fulfillment of your criteria. They will observe you for the 1 or 2 years.
if you have done any kinds of illegal and any if you can snub this child, you are not taking care of this child, they will monitor you. And if you are failed to taking care of that particular child, they will be punish you, and there is a option. So you can go to the you have to be jailed because you are taking care of a child, and you are adopt a child, but you are not taking care of it. So these risk factors is also there for this adoption process, and you have to be more careful for that when you are taking care of. And this adoption is the while the prospective parents are cannot request the child adoption of a specific child, but you have no choice to select the child. Maybe some child it's a God bless, and you are seeing that they're very good and looking so nice, and you are adopting, but afterwards you can see that their genetic composition and genetic condition is very bad. Maybe the child may suffer any kind of disease. Maybe the child, if you want to take the adoption in 1 year, from 1 year to 18 years of age, the child may be, in the cerebral palsy. The autism may happen in any time. So you have to take care. You should be the kith and kin relationship of your child as your relationship with your own child. So in that cases, you can take the responsibility, and you can take the risk for taking, adoption. So this is the most significant point when the parents are taking care of a child and adopting a child. And these are the rules and act which are giving us the support, at the same time giving us the more potentiality to adopting a child. And Ayush platform also have the same time how the Ayush can develop, because Ayush can develop through the supporting process, because support is the sensation. If there is the all types of medicines may be failed for the health issues, Ayush can support the new adopted child and the parents too. Thank you very much. Thanks for giving me such an opportunity. Namaste. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Really, as usual, you are having fullest knowledge of any subject, and this time also you guided us for all the, say, small point to the bigger points, that who may be the child to be adopted and who may be the adopting couple.